Hello students, this is our video 4 on chapter 6 lines and angles. Today we will study about parallel lines, transversal lines, corresponding angles, alternate angles and co-interior angles. You have studied these angles and parallel lines and transversal lines in class 7th also. We are revising today these topics again. Let us consider parallel lines. What are parallel lines? Parallel lines are those lines in which distance between lines always remains same. दो लाइन के बीच में हर पॉइंट के ऊपर अगर डिस्टेंस सेम है, हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो हम उनको पैरेलल लाइंस कहेंगे. या ये भी कह सकते हैं एक सेम प्लेन में, इन अ सेम प्लेन इफ टू लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग देन these lines are parallel lines. Otherwise we can say distance between two lines always remains same, then these are parallel lines. Transversal line, a line which cut any two lines known as transversal line. For example, L line and M line, these are two lines, and N line intersecting these two lines, so this will be a transversal line for line L and line M. Consider in this figure pair of vertically opposite angles. Vertical opposite angle we have studied in video 2. You can see clearly angle 1 and angle 3, angle 2 and angle 4 are vertical opposite angle. Similarly angle 5 and angle 7, angle 6 and angle 8 are vertically opposite angles. Now let's move on to pair of corresponding angles. Corresponding angles, आपने corresponding angle कैसे देखने हैं? दो लाइन है और ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एक एंगल एक्सटीरियर में, एक एंगल इंटीरियर में आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए आप, सी एंगल 1 एंड एंगल 5, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑन लेफ्ट साइड, on right side 1 and 5. One is exterior and one is interior. One is exterior to these lines and one is between these two lines, interior of L and M. So angle 1 and angle 5 are corresponding angle. Similarly angle 4 and angle 8, 4 is interior, 8 is exterior, and both are on same side of the transversal, on right side of the transversal. Angle 2 and angle 6, you can see here angle 2 and angle 6 corresponding angles. These are corresponding angles. On left side of the transversal, one is exterior and one is interior. Similarly 3 and 7, same side of the transversal, one is interior and one is exterior. These are corresponding angles. So angle 1 and angle 5 corresponding angle, angle 4 and angle 8 corresponding angle, angle 2 and angle 6 corresponding angle, angle 3 and angle 7 corresponding angles. You can identify corresponding angles. Now let's move on to pairs of alternate interior angles. Alternate interior angles, इंटीरियर नाम से ही पता लग रहा है, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ होंगे, ऑल्टरनेट का मतलब ऑल्टरनेट साइड पर होंगे, ट्रांसवर्सल की ऑल्टरनेट साइड पर. एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 इज ऑन लेफ्ट साइड एंड एंगल 5 ऑन राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. बोथ आर इन इंटीरियर ऑफ दीज टू लाइंस L and M. So angle 3 and angle 5 are interior, alternate interior angle. Similarly angle 4 and angle 6, alternate side of the transversal and interior to line L and M. So angle 4 and angle 6 also alternate interior angle. Now you can identify alternate interior angle, angle 4 and angle 6, angle 3 and angle 5. Similarly alternate exterior angles. What are alternate exterior angles? Alternate side of the transversal and exterior to the line L and M. You can see in the figure angle 2 and angle 8, both are exterior and alternate sides of the transversal.
2 is on left side of the transversal and 8 is right side of the transversal. So angle 2 and angle 8 are alternate exterior angles. Similarly, angle 1 and angle 7 are exterior alternate exterior angles. 1 is right side of the transversal and 7 is left side of the transversal, and both are alternate side of the transversal and both are exterior of the line L and line M. Let's move on to co-interior angles. Co-interior angles. Pair of co-interior angles on same side of the transversal. Same side of the transversal, that mean दोनों के दोनों एंगल सेम साइड पर होंगे ट्रांसवर्सल की. एंड को-इंटीरियर का मतलब दोनों के दोनों इंटीरियर में होंगे. इस फिगर में हम देखेंगे, लेट्स सी इन द फिगर. इंटीरियर में होने चाहिए और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होने चाहिए. तो इंटीरियर में 4 and same side of the transversal 5. 4 and 5 both the angles are on same side of the transversal and interior of L and M. Similarly, 3 and 6 co-interior angles of the same side of the transversal. 3 and 6 are on same side of the transversal on left side and interior of the line L and line M. 3 and 6 co-interior angles, 4 and 5 co-interior angles. Let's move on to our axioms. If two parallel lines cut by a transversal, pairs of corresponding angles made by transversal line are equal. अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो आपस में इक्वल होंगे. Similarly, pair of alternate interior angles and pairs of alternate exterior angles are equal. Interior angles, alternate interior angles के पेयर और alternate exterior angles के पेयर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. If lines are parallel, pair of co-interior angles on same side of the transversal are supplementary. यानी जो co-interior angle है उनका जो सम है, जो को-इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. हम इसी फिगर को कंसीडर करते हैं दोबारा से. लाइन L और लाइन M दोनों आपस में पैरेलल है. सपोज L लाइन इज पैरेलल टू M लाइन एंड N लाइन इज ट्रांसवर्सल. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. Angle 1 equal to angle 5. Similarly, angle 4 equal to angle 8. Angle 2 equal to angle 6 and angle 3 equal to angle 7. You can see here, I have written there, angle 1 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 8, angle 2 equal to angle 6, angle 3 equal to angle 7. Corresponding angles. Now, let's move on to alternate interior angles. यहाँ पे alternate interior angle कौन कौन से बनाए थे हमने? Angle 3 and angle 5. Lines are parallel, therefore angle 3 equal to angle 5. Similarly, lines are parallel, angle 4 equal to angle 6. Alternate interior angles. You can see here, angle 3 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 6. Angle 2 equal to angle 8. Angle 2 equal to angle 8 and angle 1 equal to angle 7. Alternate exterior angles. See the figure, angle 2 equal to angle 8. Alternate exterior angle. Angle 1 equal to angle 7. Alternate exterior angle. Now co-interior angles 4 and 5. Co-interior angles on the same side of the transversal, angle 4 and angle 5. Also angle 3 and angle 6. So these are supplementary. If line L parallel to line M, angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. You can see here, I have written there, angle 4 plus angle 5 equal to 180 and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 co-interior angles on same side of the transversal. But these are possible only when these two lines, line L and M, when parallel and a transversal cut them. Now, converse of this axiom is also true. That is,
if pair of corresponding angles made by transversal line are equal then two lines are parallel. अगर corresponding angle equal हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन जो corresponding angles बना रही है वो अगर इक्वल हो गए तो जो दो लाइंस होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. सिमिलरली इफ पेयर ऑफ alternate interior or alternate exterior angles are made by transversal line are equal then two lines are parallel. तब दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी. सिमिलरली if the sum of co-interior angles is 180 degree on the same side of the transversal then two lines are parallel. अगर co-interior angles का sum 180 डिग्री हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए तो सॉरी टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. तो कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा, आपको ध्यान रखना है. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑन दिस कंसेप्ट. let L line is parallel to M line. We have given already L line parallel to M line and N is a transversal. Angle 1 is equal to 70 degree. Now we have to find all the other angles, angle 5, angle 3, angle 2, angle 8, angle 4, angle 7, angle 6. Now you can identify the corresponding angles. You can identify the alternate interior angle, you can identify alternate exterior angle, co-interior angle, vertically opposite angle and linear pair also. Now angle 1 is equal to 70 degree. This is our angle 1. Line L parallel to angle, line parallel L, parallel line to M. Now N is transversal, angle 1 is 70 degree. 1 and 4 are corresponding angle. Same side of the transversal. One is exterior and one is interior. So angle 4 is also 70 degree because line L parallel to angle M. Angle 1 equal to angle 4 equal to 70 degree. Why? Corresponding angles. If two lines are parallel then their corresponding angles are equal. See, angle 1 equal to angle 6 also. Why? Angle 1 equal to angle 6. 1 70 डिग्री, एंगल 6 70 डिग्री हो जाएगा. क्यों होगा? 1 इज लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड 6 इज राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. बोथ आर एक्सटीरियर, alternate exterior angles. So angle 6 is equal to 70 degree. Now 1 plus 5 is equal to 180 degree, linear pair angle. This is 70 degree. So angle 5 is equal to 180 minus 70, that is equal to 110 degree. Now angle 5 is equal to angle 8. Corresponding angles, both are on left side of the transversal and one is exterior, one is interior. So angle 5 equal to angle 8, corresponding angles. Angle 5 is 110 degree. So angle 8 is also 110 degree. Now angle 8 plus angle 3 is equal to 180 degree. 8 plus 3 180 degree because co-interior angles on the same side of the transversal. So angle 8 is 110 degree. So angle 3 is equal to 180 minus 110, 70 degree. Angle 8 and angle 3 are co-interior angles on same side of the transversal. Therefore their sum is 180 degree because lines are parallel. L line parallel to M line. Similarly, angle 2 plus angle 4, co-interior angles on same side of the transversal. So 2 plus 4 is equal to 180 degree. Now angle 4, we have already find 70 degree. So angle 2 is equal to 180 minus 70, that is equal to 110 degree. Also angle 7 is equal to angle 2. Angle 7 is equal to angle 2. Why? Corresponding angles, L line parallel to M line. This is transversal. Both angles on same side of the transversal. One is interior, one is exterior. So angle 7 is equal to angle 2. Corresponding angles 110 degree. Angle 2 is 110 degree. So angle 7 is also 110 degree. Now angle 6 is equal to angle 3. Angle 6 is equal to angle 3. Corresponding angle similarly. So angle 6 is equal to angle 3 is, we have already find it,
एंगल 3 इज 70 डिग्री, सो एंगल 6 इज 70 डिग्री। एंगल 6 भी कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। ठीक है, एक चीज और आप नोट करेंगे, इफ टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इफ एल लाइन पैरेलल टू एम लाइन एंड एन लाइन पैरेलल टू एम लाइन, देन एल लाइन इज पैरेलल टू एम लाइन। एल एम के पैरेलल है, एन एम के पैरेलल है, तो एल और एन जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, एल लाइन पैरेलल होगी एन लाइन के। एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन, देन एल इज पैरेलल टू एन। दो लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। In next video we will cover the examples of exercise 6.2. Thank you.